First of all, I will extend my regards to Dr. Archana Mishra and Dr. Vandana Agarwal for giving me this opportunity. I've been placed at a time when there is a vibrant lecture and all. Whenever I come across diet, exercise and all, it always becomes very difficult to place your lecture. So this kind of challenges I'm quite used to, and this is what the things are right now. So we are very enchanted to such kind of things, but we hardly practice in our day-to-day life. That is something is a problem. So I run after my wife. That's why I'm fit now. So as has been rightly said, she is an iron man. So I'm running after an iron lady. So that is something which makes me fit. So I've been given the task to talk about gut health, hormones and mood. The triad in menopause, which definitely is something majorly people are undergoing or they will face sometime in their part of life. So it will be like unraveling the invisible link between driving symptoms in menopause. So, so our middle-aged women in red zone, women exhibit unique vulnerabilities in health, especially regarding mental health. Mood disturbances are more prevalent in women and may be influenced by hormonal transitions, particularly during menopause. This is something which is there. I do come across so many ladies who are here and we talk a lot about it, and at the end of the day, at the end of the consultation, I end up writing a antidepressant. This is something which is happening majorly in majority of my patients, and I always try to look back, is it a kind of excessive prescription on my behalf? But dear friends, this is not, this is the reality. We are being troubled with lots of expectations. We are not at peace. It is the mental health which is very important. After mental health, it is the physical health and nutrition and all those things will come follow. Or rather to say, the physical exercise does help with respect to improving your mental health. This is also true. They are all intertwined. If you are doing one, it is helping you with others. But this is very important. So go back, look towards our Indian tradition, with this which I am practicing a lot nowadays. We need to give up expectations. This is what I tell. So this is something which is very important, and if you are reading Gita, you should be well versed with it. Especially with the second and third adhyaya of Gita, because that will impart you the kind of knowledge which you need for good hormonal health. One of my friends who said, ki Vat, Pitta, Kaph, when it comes to endocrinology, it is very easy to explain or classify the endocrine disorder as per Ayurveda. So this is also true. As a physician of modern medicine, we are actually not too inclined towards it. Government is stressing a lot. Why not? Let's learn about something with respect to Vat, Pitta and Kaph. So, but that is not what I'm going to say today. So the case 1 is 50-year-old severe bloating plus anxiety, sleep disturbance on HRT. This is a partial relief. Case 2 is a 47-year-old lady, weight gain, irritability, sugar cravings, fatigue, and tests are normal. This is a normal scene. We come across such kind of patients every now and then. Is this hormones alone or something else are driving symptoms? Because we say that it is all hormone. Whenever you don't get anything, तो आप बता देते हो patient को कि आपको तो hormonal problem है. And they come to us, तो हम लोग भी बाल खींचने लगते हैं. अब क्या कौन सा hormonal problem बताएं? So this is very common in clinical practice. They come to us with a label कि डॉक्टर साहब मेरे तो हार्मोन डिस्टर्ब है. And they come to us every now and then in clinical practice. So the gut changes begin during perimenopause. And menopause triggers a system shift. Decrease in estrogen, decrease in metabolism, decrease in sleep, increase in stress. And on the contrary, the gut diversity, definitely the diversity is reduced. Inflammation is increased and mood vulnerability is gone up. The ovaries retires and the gut reacts. And we are not thinking of gut when we are witnessing these kind of symptoms. So menopause, depression, is it only estrogen form or something else? So the menopause microbiome shift is like this. Before menopause, see the gut bacteria, it's very colorful, and after it's all red. Red for the husband. It's red for the husband, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं. परेशान बोले अभी तो हम नाराज चल रहे हैं. So this is again very common. So before and after menopause, the gut diversity is actually driving. It is increasing your inflammatory
component of the gut. And Ayurveda talks a lot about gut. Symptoms we see daily is the gut involved. Symptoms are like bloating, कुछ भी खाते हैं तो पेट भर जाता है, पेट फूला फूला लगता है, गैस हो जाती है, कॉमन कंप्लेंट्स है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में. Anxiety, weight gain, poor sleep, low energy. Sometimes we end up giving a small SSRI and सब कुछ ठीक हो जाता है. So it is not always gut, but it can be gut also. Let's see. So are these separate problems or one hidden connection? Is there something which we are missing? We have not been taught, we have not been told. So the hidden gut link is microbiome shift, gut-brain signaling, serotonin dysregulation, insulin microbiome loop, gut melatonin excess and inflammation. So these are the things which we are actually not taking care of. Low energy because of inflammation, gut melatonin excess is disturbing your sleep. Insulin microbiome loop is leading to weight gain. Serotonin dysregulation is causing anxiety, lots and lots of anxiety. Brain fog is because of gut-brain signaling defect. And bloating is because of microbiome shift. The answer is very simple. We all know these answers, but we have not properly placed these things at one place. So that is again a problem as a physician of modern medicine. Is bloating just gas or a microbiome signal? What we see clinically, post-meal fullness, पेट बराबर लगता है, खाने के बाद एक रोटी खाओ तब लगता है दूसरी नहीं खाने. पर हाँ वो अलग बात है, सेवरी आइटम दे दिया तो डेफिनेटली खा लेते हो, वो वहाँ पे गैस को भी डिफाई कर देता है वो. पर दिस इज ट्रू. मैंने कहीं अगर स्विगी और इससे आ गया कुछ तो वो जरूर खाते बनता है, पिज़्ज़ा जरूर खाते बनता है. तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड IBS लाइक समोसे तो डेफिनेटली बहुत फेवरेट है. सो थिंक अबाउट एंटीबायोटिक हिस्ट्री, अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल. दिस इज व्हाट वी आर इन. So how often do we treat symptom versus cause? Symptom आ गया तो एक गोली बढ़ा दी. मेजॉरिटी हम यही करते हैं कि एक सिम्टम है, सर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, पेट फूलने की गोली, सारी गोलियाँ होती है. फिर पेशेंट बोलता है तो खाएगा कौन? तो फिर खाने के लिए भी आपको एक आदमी ढूंढना पड़ता है. तो दिस इज व्हाट आवर प्रिस्क्रिप्शंस आर नाउअडेज. तो कई बार क्या होता है कि व्हेनेवर आई गिव वन टैबलेट एज अ प्रिस्क्रिप्शन तो पेशेंट देखते रहता है, डॉक्टर साहब हमने तो सोचा आप डीएन हो. मैंने कहा उससे क्या होता है, आपको एक दवा दी खाइए आप. तो समटाइम्स दे गेट स्केप्टिकल, बोलिए हम गलत जगह आ गए. तो दिस इज आल्सो कॉमन. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू आर राइटिंग फॉर टैबलेट और टू, द पेशेंट विल गेट स्केप्टिकल. उसे लगेगा यार ये कम पढ़े लिखे आदमी की बस. तो दिस इज व्हाट वी पीपल आर ऑफरिंग. हमारे गट माइक्रोबायोम को हम भी खराब कर रहे हैं. छोटी सी सर्दी खांसी हुई, एंटीबायोटिक लिख दिया. सो हिडन गट लिंक इज माइक्रोबायोम इम्बैलेंस, एक्सेसिव फर्मेंटेशन, excess fermentation and visceral hypersensitivity. So the mind problem or gut-brain communication. The question is it a mind problem or something else? Clinical complaints are poor concentration, mental heaviness, memory lapses, याददाश्त कम होने लगती है. And clinical insight is often seen with dyspepsia. पेट खराब रहता है, मुंह में खट्टी डकार आती रहती है. IBS is such a common complaint. And normal imaging is normal. डॉक्टर तो छोटे का है, अपर GI भी हो जाता है, लोअर GI भी हो जाता है, and all kind of things हो जाती है. सारी नलियाँ डल चुकी रहती है. And the symptoms are still persisting. वो तो ठीक है, बोले हमने जांच कर ली, अब आप चाहिए. This is what majority of us are doing. We are not sympathetic with respect to symptoms of our patients. So what do we evaluate first? Let's see. So the hidden gut link is gut metabolites affecting brain, vagus nerve signaling and neuroinflammation. So can anxiety begin in the intestines? What patients report is restlessness, palpitations, uneasiness. The clinical observation is that gut treatment sometimes improves anxiety. How you observe this? Have you observed this in your practice? कि आपने किसी को स्पोरोलैक लिखा और उससे सब ठीक हो गया? तो it is very difficult, but ठीक है. Hidden gut link is serotonin regulation in gut, which is very important. If you have more of serotonin, it will disturb your behavior with respect to anxiety. Dysbias is altering neurotransmitters and stress gut permeability low. Because there is a slimy layer of small chain fatty acid, SCFA. तो जब आप SCFAs कम होने लगता है तो gut is permeable for all microorganisms. They can enter your gut through gut. They can enter your circulation. SCFAs are promoted by many of the diet components, and there are many components which actually oppose it. So whatever you are eating, look back. I always say
जो परंपरागत रूप से आप भोजन लेते थे वो आपके लिए श्रेष्ठ भोजन था। आदिवासी इलाके से आए लोग मॉडर्न हो गए, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन मॉडर्न लाइफस्टाइल अपना ली, कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को वेस्टर्न ही समझने लगे। उस कम्युनिटी में देखिए 50% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आइदर डायबिटीज, हार्ट डिजीज। इसमें आई एम ओनली मेकिंग अ एपिडेमोलॉजिकल कमेंट, दिस इज नॉट अ कास्ट बेस्ड कमेंट, बट दिस इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि आपको बासी खाने में अखरता है। छत्तीसगढ़ में हम लोग बासी खाते थे रोज, बताने में भी शर्म आती थी, बट अब पता चला माधवन खा रहा है, सुपर फूड बोल के खा रहा है, वो कांची बोल के खा रहा है। तो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। यू हैव टू लुक बैक, आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना है। इन आवर महाराष्ट्रियन काइंड ऑफ पैटर्न वी हैव गॉट सो मेनी चटनीज एंड उसड़ एंड ऑल गुड थिंग्स, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम I am serving you a diversity of gut diaspora with respect to fiber, with respect to multiple grains and all. So look back, don't go for special with आपको oats खाने की जरूरत नहीं है, क्विनोआ खाने की जरूरत नहीं है। These kind of things they will last for few days. आपका जो पारंपरिक भोजन है वो आपके पेट के लिए सबसे अच्छा है। बस मॉडर्न एडवाइस इतनी है कि पोर्शन साइज कंट्रोल कर लीजिए, आप कुछ नहीं करना। तो आपको घर में अगर घी में ही सब्जी बनानी जरूर बनाइए, क्योंकि वो हो सकता है वो घी में ही अच्छी बनती हो सकती है, तो उसकी कटोरी एक रखिए। दिस इज हाउ वी शुड डू, अदरवाइज क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। हमने बहुत सारे चेक्स लगाए तो मन खराब हो जाएगा। द वेट गेन, कैलोरी अलोन और माइक्रोबायोम एफिशिएंसी। लेट्स सी क्लिनिकल रियलिटी, सेम डाइट, डिफरेंट वेट गेन, रेजिस्टेंट वेट लॉस। सो क्लिनिकल इनसाइट्स, गट एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। नाउअडेज सारे ऑर्गन्स एंडोक्राइन हो रहे हैं, हड्डियां भी हमने एंडोक्राइन बना दी। पता चला कि 3 हार्मोन्स हड्डियों से भी रिलीज होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से हार्मोन हड्डियों से आते हैं? सो दिस इज हाउ there are 3 hormones. So now we consider bone as an endocrine organ. So why do some patients gain weight despite control? The hidden gut link is microbiome affects energy extraction, insulin resistance, microbiome loop and chronic inflammation. Answer घूम फिर के वहीं आ जाता है। So the sleep clinic case, a gut case. Patient complains non-refreshing sleep. अच्छे से नींद ही नहीं आ रही, बार बार टूट जाती है। Frequent awakening, night reflux, बहुत कॉमन। मुंह में खट्टा पानी आया, नींद खुल गई। तो द क्लिनिकल क्लू इज लेट मील्स, ब्लड गट सेप्टल। हमारे पूर्वज क्या करते थे? दिन ढलने से पहले भोजन कर लेते थे। आपको वो अभी मैंने सुबह ही कहा था कि मुझे सबसे अगर एक ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है तो वो चौपाल पे बैठ के बीड़ी फूकता हुआ आदमी चाहिए मुझे। जो वो बिंदास आदमी होता था ना, उसके पास समय होता था, उसके पीछे उसकी पूंछ और पटाखा नहीं बंधा हुआ था। This is basic problem. We are actually running our lives like this, and still we are looking for plastic solutions. कि भाई ये खा लो, वो खा लो। Still आपको लगता है कि आपके जो पूर्वज खाते थे वो गधे थे। No, they were the most wisest people. आपको कुछ भी स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं। हमारे पूर्वजों को एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं थी, because they were very particular with respect to सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया, आपने सूर्य को अर्घदान किया। We are now making a mockery of it. पर सूर्य को अर्घदान करते हैं तो जो फर्स्ट रे आती है, I am talking about Harvard science now. तो जो फर्स्ट रे आती है तो pineal gland को स्टिमुलेट करती है, it resets and rearranges your daily schedule. Diurnal rhythm को चेंज कर देता है। कॉर्टिसोल कितने बजे कब तक कॉर्टिसोल राइज करेगा, कब डिक्रीज होगा, that has been decided by that first ray. कितने लोगों ने आज सुबह की रोशनी देखी, कितने लोगों ने उगता हुआ सूरज देखा है? That is our problem. That is a genuine problem with respect to aging, with respect to whatever we are facing. फिर आप मेलाटोनिन का सप्लीमेंटेशन लेने की क्या जरूरत है? अगर आप सुबह अर्घ ही देने लग जाओ, हमारा ट्रेडिशन रहा है। Those who don't believe in it, वो पूजा की तरह नहीं देखें, वैसे ही सूर्य के दर्शन कर लीजिए। क्योंकि रिलीजन तो था नहीं इंडिया में, जो भी था वो लाइफस्टाइल और साइंस से ही जुड़ा हुआ था। आप उसको अनरेवल कर रहे हो, यू आर जस्ट अनरेवलिंग इट, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ रिलीजन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि रिलीजन नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसका पूरी लाइफस्टाइल ही है। सो डू वी असेस गट इन इंसोम्निया? हार्डली वी डोंट, बिकॉज गट बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस मेलाटोनिन, inflammatory signaling and circadian rhythm. This is something which is there. Low energy or fatigue beyond thyroid and hemoglobin is common presentation. Persistent tiredness, daytime lethargy, low motivation, सबको होता है। Clinical scenario, normal labs, persistent fatigue, सब कुछ normal रहता है। तो we tend to write antidepressants usually, तो उससे फायदा भी हो जाता है, but there are good number of people who don't respond, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है, we are hardly doing anything. तो what is the next dimension? Again it is gut.
It is the inflammation in the gut, it is the nutrient malabsorption, it is the mitochondrial dysfunction. सबसे ज़्यादा बीमार होने पे आदमी सबसे ज़्यादा क्या पीता है? फलों का जूस पीना पसंद करता है। तो आप देखिएगा, आपको YouTube में भी there are very good speakers. So there is one pediatric endocrinologist from, I think from UK, Rob Williams or Rob Taylor, I am not getting it. So he says very clearly, this glass of juice is basically a toxin to your mitochondria because it will release sudden gush of fructose, and fructose as a sugar is not good for mitochondria. तो बीमार होने पे जब हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, we go first. So basically he was the one who said कि यार भगवान ने फलों को मीठा इसलिए बनाया है कि आदमी उसके साथ जो देव तत्व है, that is the resha, he will have it. पर आदमी तो चालाक है, वही संतरे का जूस निकाल के ले लेता है. तो it is the fiber of संतरा which is divya for us, which should be a divine for us, which should actually be taking care of our gut microbiome, but we are not taking it. That is the problem. So this is how the things are. So now tell, how many of these do you see every day? Bloating, बहुत लोग हाथ उठा देंगे. Brain fog, subjective है. Anxiety, weight gain, poor sleep, low energy. सबको होता है. And the questions arise, how many are tested symptomatically? How many have a gut-driven root cause? Should gut assessment be routine in OPD? That is, again, we have less modalities to check it. The role of hormone replacement therapy in menopause care, HRT is not for every woman, but for the right woman at the right time, and it is the most effective therapy. It was way back in 70s जब इन्होंने प्रिमारिन बनाया, the horse urine से इन्होंने estradiol निकाला. So all of us wanted to be in our youth. सबने बहुत rampantly West में सबने hormones लेना चालू कर दिया. The ladies were in 70s, late 70s, early 80s. So what happened at 1980, around 1985, there was a paper called Women Health Initiative, WHI, which reported that बहुत excessive cardiomortality होती है, and all of a sudden you disbanded. All of a sudden you said कि no, HRT should be big no. It is the fallacy, it is basically the problem of mal-use of this particular product. It was wrongly used at the wrong time and wrong place. But HRT is very important, and there are many proponents of HRT who say that you should have HRT till the last breath of your life, but still we could not make any guideline which is actually driving us to give HRT to every woman. Who should be evaluated? Symptomatic menopausal women, vasomotor symptoms like hot flashes, night sweats, sleep disturbances, mood changes, genitourinary symptoms, early menopause, premature ovarian failure, or osteoporosis risk. These are the ones who should be evaluated. What HRT does biologically? It replaces estrogen deficiency, you know better than me, stabilizes thermoregulation, modulates neurotransmitters, improves insulin sensitivity, and reduces systemic inflammation. These are all things which I was talking about. So they are all reduced by HRT. Who benefits the most? Age less than 60 years, within 10 years of menopause, moderate severe symptoms. There are papers. The moment you achieve menopause as early as possible, if you are on low dose HRT, it is not going to create problems with respect to those thromboembolic events and all. You will have no mental fogging. Not many things will do. But still we don't have a guideline, so I'm not the right place. I'm not the right person, and this is not the right place where we should propose HRT. But at least the ones who are suffering, they can have. Who should not receive systemic HRT? Breast cancer, unexplained vaginal bleeding, active liver disease, thromboembolism. These are the scary things which we need to work out. We need to have better tools to detect this so that a lady can have HRT. But in the years to come, see how the fallacy is, still the world is ignorant about the 50% population. This is a very big challenge, but hardly we are talking of. So the clinical approach before prescribing HRT is confirm menopause, assess symptom severity, rule out contraindications, risk for severe risk, breast cancer risk, thromboembolic risk, choose HRT type, estrogen alone, estrogen plus progestin, local vaginal. You know better than me how to select this HRTs. But some patients still return symptomatic even after HRT. Then again, the loop is not yet complete. So why HRT alone may not fix symptoms? हमने तो दे दिया HRT. Still bloating is persisting. Still lady is anxious. She has some problems.
Because dysbiosis persists, it is not going. Inflammation is persisting, insulin resistance is persisting. So when to suspect gut involvement? When there is bloating, IBS, mood symptoms, fatigue, sleep issues and resistant weight gain. दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, पर वजन नहीं कम हो रहा। तो हम लोग बोलते हैं कि मैडम आप झूठ बोल रही हो, आप चोरी छिपे खाती हो। दिस इज व्हाट वी डू। हमें ऐसे ही होता है, हम लोग बोलते हैं कि अरे आप तो कुछ ना कुछ खा ही रहे हो। मैं तो कई बार ये भी बोल देता हूँ, भाई मेरी मर्सिडीज की कार खड़ी है, उसमें अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो चलेगी नहीं, तो आपका वजन कैसे बढ़ रहा है? बट दिस इज हैपनिंग। देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ पीपल व्हाट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दे आर नॉट लूजिंग वेट। दिस इज ट्रू, बट अपनी फैलेसिस कौन एक्सेप्ट करता है? तो what to ask in OPD? Bowel habits, sleep pattern, craving, stress, activity level. This is something which needs assessment. So diet strategy in menopause is fiber improves gut micro. I will not go in detail because I think it is being nicely taken care of. Ma'am has talked about protein intake. Protein intake में सबसे पहला होता है कि जैसे बच्चे ने प्रोटीन का डब्बा मंगवाया तो हमारे यहाँ मदर इन लॉ ने हल्ला मचाया कि भाई गुर्दा खराब हो जाएगा, देखो ये कितना प्रोटीन खा रहा है, 2 स्कूप खा लेता है, बोले 3 स्कूप खा लेता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो जो वे प्रोटीन है बेसिकली आपका जो पनीर जब पानी छोड़ता है उसको वो कंसंट्रेट करके प्रोटीन इट्स अ मिल्क प्रोटीन, तो वेजिटेरियंस ले सकते हैं। दूसरी बात है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। एक वे प्रोटीन कंसंट्रेट आता है, उसमें 25 ग्राम्स प्रोटीन आता है। बेसिकली उसमें आपका थोड़ा बहुत फैट और बाकी का लैक्टोज और ये कॉम्पोनेंट रहेगा। तो जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो ये ना ले, वो आइसोप्योर वाला प्रोटीन ले, वे प्रोटीन आइसोलेट ले, उसमें 30 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा आपको एक स्कूप में। और तीसरा आता है जब आपको ब्लोटिंग हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स, प्रोटीन खाते हो तो पेट फूलने लगता है, होता है। अब बोलोगे यार नाटक कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो आपके लिए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है। 3 प्रकार के वे प्रोटीन उपलब्ध है हमारे। तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड में 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में, वो आप लेकर देंगे, आपको रियली बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये 2 स्कूप प्रोटीन तो लीजिए। कितना प्रोटीन? 0.8 ग्राम्स के हिसाब से आप तुरंत बोल दो कि 0.8 ग्राम्स के हिसाब से इट शुड बी 60 ग्राम्स। बट द प्रॉब्लम इज दिस 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट इज फॉर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, बट वी आर मेजरली वेजिटेरियंस। वी आर मेजरली वेजिटेरियंस, वी आर नॉट ऑन 6 कोर्स मील फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। तो आपका एक्चुअली होना चाहिए इट शुड बी 1.5 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। गुर्दा खराब होता, थोड़ा यूरिया क्रिएटिन, हमारे डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब ने कैसे लिख दिया प्रोटीन? This is a blunder. Actually, even in renal failure, you are supposed to restrict it by 0.6 gram, but that too high biological value protein. So, renal failure में जो restrict करने के बाद जो value आती है ना, उतना भी unfortunately आप लोगों में से 80% लोग आए नहीं ले रहे होंगे। तो जब आपका बच्चा अगर whey protein खाए तो please don't stop, because we are hardly eating anything. We are protein deficient. So a fiber-rich, protein-adequate, microbiome supportive diet is central. So this is a problem with majority all of us. I am not saying I am immune to it, but this is something which we need to see to this gross level. बड़ी-बड़ी बातें will not solve your problem. आपको डे टू डे लाइफ में ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, then only आप कठिन मोमेंट में अपने आप को टेस्ट करिए। तो एक्सपीरियंस, क्रिकेट में एक्सपीरियंस बल्लेबाज होता है तो वो बाहर जाती हुई गेंदों पे बल्ला नहीं चलाता। क्यों? बल्ला चलाओ तो कैच हो जाओगे आप। बट हम रोज ऐसे कैच होते हैं। जब हमें बड़ी बड़ी बातें कर ली, माइंडफुल बातें कर ली, एक्सरसाइज की बात कर ली, बहुत बिहेवियरल थेरेपी की बात कर ली, और जब पता चला बल्ला बाहर घुमा दिया, कैच दे दिया। दिस इज वेरी कॉमनली वी आर डूइंग, दिस इज अ बिग मिस्टेक। उसके लिए रिट्रोस्पेक्टिवली आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। एवरी डे एवरी एक्शन नीड्स टू बी वॉच्ड एंड सीन एंड फेल्ट, तब सॉल्यूशंस निकलेंगे। लुक बैक, आप जो गीता पढ़ सकते हैं वो गीता पढ़ के देखिए, अप्लाई करिए। कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? तो बहुत कम लोगों के हाथ उठेंगे। कितने लोगों ने गीता अप्लाई की है? देन अगेन और कम लोगों के हाथ उठेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन दैट इज समथिंग विच इज मैटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो 5000 ईयर्स पुराना बात कर रहा हूँ, और गीता इज समथिंग विच इज अराउंड 15,000 ईयर्स। तो जो चीजें इतने साल पहले आ गए उसको मॉडर्न रूप में लुक दे के आप नए इसमें ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, दैट डजंट वर्क। You'll have to go back to your roots, see things which are very important, and that is what the medical strategy should be. Targeted probiotics, treat insulin resistance, lifestyle modification, metformin, there are a number of drugs. Vitamin D supplementation, B12 correction. B12 we were hardly very sensitive about B12. ये तो labs आ गए और patient report लेकर आ गया कि साहब मेरा B12 बहुत low है।
तो जनरल मेडिसिन में तो मैंने B12 तभी से लिखना चालू किया, अदरवाइज आई वॉज नॉट वेरी सेंसिटिव अबाउट B12 थेरेपी एंड स्टिल आई एम वेरी स्केप्टिकल कि व्हाट आर द नॉर्मल B12 लेवल्स इन इंडिया, आई एम नॉट वेरी क्लियर। तो वो तो न्यूट्रिशनल चीज़ों में स्टडीज़ केवल सप्लीमेंटेशन की होती है। पेशेंट आता है बोलता है ताकत की गोली दीजिए डॉक्टर साहब, पर ताकत की गोली से क्या होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। There was recently a paper which talks about BAC1 and BAC2 receptors. They are being, the expression is increased in malignancy in some of the cases, and they were the patients who are on antioxidants and all this. And that paper talks about aggravation of this problem with respect to malignancy when you supplement yourself with antioxidants. So be aware of things. Vitamin D आपको हमेशा देना है, lifelong देना है, 20 to 40 मिली के बीच में रखना है। Toxicity is also important. It's a double-edged sword, but we are not very clear about water-soluble vitamins. Is it a double-edged sword? हमें लगता है कि वो तो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो that is again a problem which even I don't know. So combine HRT plus metabolic therapy. इसलिए कभी भी vitamin B complex देना हो तो give it for a week or 10 days, not more than that. That is not going to solve your problems. So gut microbiota has the potential to improve health of menopausal women by regulating estrogen. So it plays a key role in regulating estrogen levels by secreting B-glucuronidase. It increases the reabsorption of estrogen in the enterohepatic circulation and mediates phytoestrogen metabolism. There are feelings, there is gut feeling, exploring the intertwined trilateral nexus of gut microbiota, sex hormones and mental health. Lots of neuroendocrine papers are there. The gut-brain mood, what's happening biologically. Gut makes mood messengers. Serotonin, GABA, dopamine are influenced by gut microbes. Exact brain impact still evolving. Inflammation talks to the brain, dysbiosis, cytokines, neuroinflammation, anxiety, depression risk. जैसे ही estradiol कम हो जाता है menopause के बाद, there is sudden gush of increase in inflammation. This has been proved every now and then. As सुबह मैं obesity का लेक्चर ले रहा था, तो GLP एनालॉग के साथ जब हम estradiol ऐड करते हैं तो inflammatory markers are dropped and पेट का वजन कम होने लगता है। तो menopause के बाद weight loss के लिए there is a hormonal interplay which is actually hiding, which is actually preventing your patient from losing weight. So that is estradiol replacement is also required. There are enough papers now which talks about GLP plus estrogen. So it is your duty now to explore it and bring it to that level कि मुझे guidelines मिले और मैं confidently लिख पाऊँ. Unfortunately, I don't have that. Stress excess gets activated, gut imbalance, HP overdrive, increase in cortisol, poor sleep, mood swing. The gut doesn't just digest food, it shapes mood, stress and emotional resilience. So menopause care needs a new model. Old model is hormones, symptoms, HRT. New model क्या होना चाहिए? Hormones plus gut plus brain, symptoms and integrated care. So we are not treating ovaries, we are treating a neuroendocrine gut system. So that is something, a new concept. So the orchestra analogy for menopause is an analogy. Menopause is not a single instrument going silent. It is the conductor stepping down, uncoordinated. Declining estrogen, no conductor. Gut microgram strings, brain neurotransmitters are winds, and metabolism is percussion. In treatment, retuned orchestra. So there are a lot many things which are involved in this basically. तो द एनालॉजी टॉक्स रिगार्डिंग दिस समटाइम्स सब चीज़ों को पिक्चर देना ज़रूरी होता है एंड व्हेन यू गिव अ पिक्चर टू योर वर्ड्स इज समटाइम्स देयर आर सम पीपल हु विल डू समथिंग गुड विद रिस्पेक्ट टू दैट क्योंकि हम लोग तो वर्कर्स हैं वी आर लाइक पोस्टमैन आप रिसर्च करते हो वी डिलीवर इट बट देयर आर पीपल हु शुड बी इन रिसर्च एटलीस्ट द यंगर वंस एंड शुड गिव अस आंसर्स सो टेक अवे मैसेजेस menopausal mood symptoms are not purely hormonal. They are neuroendocrine microbiome driven. Gut dysbiosis influences estrogen metabolism, inflammation, insulin resistance, and neurotransmitters. Symptoms like bloating, anxiety, fatigue, poor sleep, and resistant weight gain often share a common gut-brain hormone axis. HRT is highly effective for right women, but HRT alone may not correct gut dysbiosis or metabolic dysfunction. Diet, resistance training, circadian alignment, and stress modulation are foundational therapies. This is what being offered by West. But we already have our own system. हमें उसको फिर से पुनर्स्थापित करना होगा. Targeted probiotics, metabolic correction, and micronutrient optimization enhances outcome.
नहीं तो लोग घर में एक्सरसाइज ही करते रहेंगे, काम कौन करेगा? दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। आप बोलोगे बड़ी बड़ी बातें तो आपने दे दी, पर एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी के घर में इन चीज़ों के लिए समय नहीं होता। तो आपको वापस अपने प्राकृतिक चीज़ों में, आप एज अ डॉक्टर तो हम लोग रिच लोग हैं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मेरे सर्वेंट घर में खाना बनाएगा, दूसरा सर्वेंट घर में साफ सफाई करेगा, तो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। पर आर दीज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस? नो, दे आर नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। So targeted probiotics, metabolic correction and micronutrient optimization enhance outcomes. Optimal menopause care requires an integrated hormonal plus metabolic plus microbiome approach. And this is what it is. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Dr. Sachin. It was really wonderful. And especially we really like that part where you reinforce the going back to the roots. That's really needed, and we have to set the orchestra, reset the orchestra of which is disturbed after menopause. And हमारे यहाँ तो कहते भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन. It was the Ayurveda which first told the world कि गट से ही सब कुछ होता है, गट से ही सब. आठ बारी तो सिर बारी, ऐसा कहते थे बचपन में, मुझे याद है. Thank you so much. नहीं आयुर्वेदा के वो कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं. वात पित्त कफ को मैं भी एक्चुअली पढ़ना चालू कर रहा हूँ. Yes, very true. But we are not following it. Sir, I just have one question. Yes. Sir, there are so many kind of. ये सब काम तो किसी न किसी को करना पड़ेगा मैडम. मैं भी बहुत इग्नोरेंट हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं आता. But मेरा what I know is कि lactobacillus and bifidobacterium, these are two bacteria which are still I am using it in my clinical practice and it is a established thing. If there is loss of these bacteria, तो SCFA की जो coating बनती है intestine और blood vessels के बीच में, that is a jelly, it is in the form of a jelly, that is lost. So these are the two bacteria which are beneficial. बाकी जो इसमें तो आजकल जो स्टूल इम्प्लांट और स्टूल ट्रांसप्लांट की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे देयर इज अ बिग डाइवर्सिटी व्हिच वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव वेरी गुड बैक्टीरिया. अभी मैं पूछूं कि कितनों को बंधी हुई टट्टी होती है सुबह, तो आप लोग हाथ नहीं उठाओगे. सुनने में कर रोज आप कर रहे हो पर आप उठाओगे नहीं. सच्चाई ये है कि दैट इज ऑल्सो वी आर मिसिंग इन आवर लाइफ. वी डोंट हैव दैट. आप एक गट माइक्रोबायोम में यही देख लीजिए. The moment you go to your toilet, you go to a loo, the moment you are passing stools, the quality of stools will give you a very clear answer. So I don't know much about it. I am also ignorant like you people. But I have been given the task to talk about it, so thanks to ma'am कि at least मैं थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा हो गया. Is there any taste to identify? Because in lactobacilli there are so many. Yeah, definitely. तो इसमें किसी न किसी इसमें there are people who are actually developing a lot of strategies. तो I happen to meet some. तो उनसे कांटेक्ट में आना पड़ेगा. अगली बार उनको लेक्चर के लिए बुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो नहीं आता. तो या तो कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट में बात करे या there are people who are working in gut microbiota. There are a lot. और ये एक नया एवेन्यू है. एवेन्यू नया नहीं है. We know since Ayurveda days कि पेट से ही सारी बीमारियाँ आती है. But we are ignorant. मैडम डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स के बाद हम देते ही हैं यूजुअली. बट थोड़ा सा रोल अगर मेरे सब्जेक्ट में बोले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है. देयर आर स्टडीज जहाँ गट माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ने प्रीबायोटिक्स दिया. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा जूनियर कर रहा था राम कुमार को, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. वहाँ भी गेव स्पोरोलैक और दूसरा भी प्रकार का दिया, पर उसमें फ़ायदा नहीं हुआ. बट आई थिंक वी आर मिसिंग सम लिंक समवेयर. हो सकता है डाइट में ही वो कॉम्पोनेंट निकल आए, फूड पार्टिकल्स में लिया है. उन बैक्टीरिया को वो खाना चाहिए जो वो खाने के आदी हैं. आप उनको कुछ और ही खिला देते हो तो वो फिर कुछ और ही प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिनको है उनको तो डेफिनेटली ग्लूटेन. बाकी इसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से. बट हाँ, अगर आप मुझे मिलेट्स बोले और मीट बोले तो दोनों में मैं मिलेट्स प्रेफर करूँगा. But I should be very comfortable with millets. There are people who get bloating with millets also. This is also true. तो वो तो आपको तय करना पड़ेगा. पर पारंपरिक भोजन में हमारे यहाँ मिलेट्स था, काफ़ी अच्छे से था. और हमारे पूर्वजों को गैस ब्लोटिंग ये सब नहीं होती थी. आजकल हर किसी को होती है. तो शायद वीट का कोई रोल तो होगा.
Yes, this is true. अब डाउन साउथ दे हैव प्रिजर्व्ड अ लॉट, वो रागी मुद्दा वो सब खाने, तो वो अपने यहाँ कहाँ मिलेगा?